हाँ जी, हमारे पास 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में एक एपी है 3, 15, 27, 39, राइट। ये एपी गिवन है और पूछा जाता है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट इज 54th टर्म। जो 54th टर्म है उससे कौन सी टर्म 132 ज्यादा है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको पहले बोलूंगा, आप पहले इसमें से डी निकालो, कॉमन डिफरेंस। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, a1 3, a2 15, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू 15 माइनस 3, d इज इक्वल टू 12। तो हमने d निकाला, इज इट ओके। नाउ लिसन, अब हमें देखना है कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है, इज इट ओके, वो उससे ज्यादा है। तो मैं लिखता हूं लेट ए एन बी 132 मोर देन ए 54। ए एन वो टर्म होगी जो 54 से कितना ज्यादा होगी, 132। तो मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखता हूं, मैं लिखता हूं ए एन वो टर्म, उसको माइनस करूंगा ए 54, तो आंसर निकलेगा 132। क्योंकि ये टर्म ज्यादा है, ये छोटी है, और फर्क कितना है 132। तो इस बड़ी टर्म से अगर मैं 154th टर्म सब्ट्रैक्ट करूंगा मुझे मिलेगा 132। अब ये टर्म है जिसको मैंने यही से माना, ये मान लेते हैं ये वो टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, इसको हमने माना है। अब हम इसको फॉर्मूलाज दे देंगे ताकि हमें इसका वैल्यू निकल आए। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे इसको a प्लस एन माइनस 1 डी, ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा। अब माइनस ये, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस के लिए सबसे पहले 54th टर्म के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, राइट, ए प्लस 53 डी इज इक्वल टू 132। मगर एक बात है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था a प्लस 53 डी, मगर मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि सामने माइनस है, इज इट ओके। इसके लिए हमें इसको ब्रैकेट में रखना पड़ा। अब मैं जब इसको खोलूंगा मैं लिखूंगा a, ये हो गया प्लस एन माइनस 1, तो d जो है वो हमने निकाला पहले 12 है, दे दो 12 माइनस, अब ये a जो है माइनस के साथ ये निकलेगा बाहर माइनस, अब ये माइनस है ये प्लस है, राइट, प्लस माइनस माइनस 53d माइनस 53d इज इक्वल टू 132। अब आप देख लीजिए ये जो a है प्लस है, ये जो a है ये माइनस है, तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा हम आराम कर लेंगे। अब n माइनस 1 12 माइनस 53 d का वैल्यू हमें पता है 12 है, इज इक्वल टू 132। इज इट ओके। नाउ लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट स्टेप। यू मल्टीप्लाई 53 इंटू 12, हाउ मच इज इट, ये कहते हैं 636 is equal to 132, right? Now what you can do, I will transfer 638 on right hand side, is it okay? So I will do this, n minus 1 12 is equal to 132, it is 638 is minus from left hand side, when I take it on right hand side it will become plus, so plus 638. Okay, Pizza, tell me what is the sum? Okay, it is 770, 770, right? It is 770। एक बार फिर से कर लो चेक। तो अब इसके बाद मैं यहां से लिखता हूं, okay, it is 770, n minus 1 is equal to 770 divided by 12, which 12, this 12, right? तो इसे इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकलता है हमें वहां से,
तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन गलत, पॉइंट्स में नहीं ना आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स गलत है। कहां पर गलत किया बताइए? 54th टर्म थी ये, हाँ ये इसको मल्टीप्लाई फिर से कर लो, 12 36। मैंने सही बोला, आपने गलत। ओके मैंने गलत लिखा, आपने सही बोला, चलो कल करेक्ट कर लेते हैं। इट इज 36 राइट। तो चलिए अब मैं इसको करता हूं, अब आप इसको ऐड कीजिए 36। सो नाउ इट इज 68 आई थिंक, राइट। नाउ 768। ओके सो हमने गलत किया था, we did one mistake here. When we multiply 53 into 12, it becomes 636, right? But we have written it already that 638. That's wrong. Now divide it. 64. Okay, n is equal to 64. I will take this minus 1 on right hand side, it will become plus. So 65, right? So 65 is the number of term which is more than 54th term. 54th term से 65th term कितना ज्यादा है? 132। तो जो हमें टर्म निकालनी थी वो कौन सी टर्म है? 65th टर्म। तो 54th टर्म से ये कितना ज्यादा है? 132। Hence 65th term is 132 more than 54th term. तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12. Two APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th terms? Okay, listen. दो APs हैं, दो AP अलग अलग से हैं। कॉमन डिफरेंस किसी AP की कुछ भी हो सकती है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन गिवन है जो पहले AP की कॉमन डिफरेंस है वो दूसरे की भी है। अगर पहले AP की कॉमन डिफरेंस है सपोज 5, तो इसका मतलब है दूसरे की भी वही है। इज इट ओके? लेकिन वो कॉमन डिफरेंस क्या है वो बताया नहीं गया है। अब ये जो दो APs हैं इनके 100 वाली टर्म, इसकी भी 100th टर्म ले लेंगे, उसकी भी 100 टर्म ले लेंगे, उनमें डिफरेंस है 100। कितना है? 100। हमसे पूछा जाता है आप बताओ 1000th टर्म में फिर इनको क्या डिफरेंस होगी। इज इट ओके? तो मैं बताता हूं हम इसको कैसे करेंगे। मैं लिखता हूं, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। फॉर फर्स्ट AP, पहले हम बात करेंगे पहले AP की। इज इट ओके? फर्स्ट टर्म हम मानते हैं इसकी फर्स्ट टर्म है A. Is it okay? First term is A. You can write down A1. That's also correct, right? So first term, common difference that is equal to D. हमको नहीं पता क्या कॉमन डिफरेंस है, हम इसको नाम क्या देते हैं? D. Is it okay? मैं लिखता हूं अब A 100th term A plus, but I will not write small a. A plus 99D. ये कौन सी टर्म है? 100 टर्म के लिए यही लिखते हैं ना। अब मैंने डिफरेंट क्या किया? मैंने इतना किया कि मैंने कैपिटल लिखा। इज इट ओके? क्योंकि पहले AP को मैं कैपिटल लिखूंगा फर्स्ट टर्म, सेकंड को मैं लिखूंगा स्मॉलर, ताकि हमें पता चले वो कौन है और ये कौन है। तो 100th टर्म को मैंने लिखा A plus 99D। इज इट ओके? ऐसा ही करते थे ना हम, तो हो गया ये। अब आप देख लीजिए फॉर सेकंड AP, अब दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैं लिखता हूं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1, A और A1। इज इट ओके? स्मॉलर A1, इट इज नॉट द सेम AP। अब हम दूसरा AP ले रहे हैं,
ठीक है, उसके लिए भी तो पहली टर्म होगी ना, फर्स्ट टर्म। तो लिखा मैंने A1 कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अच्छा मुझे बताइए, मैंने उसमें लिखा था कॉमन डिफरेंस D, इसमें क्या लिखूं? उसमें लिखा था कॉमन डिफरेंस D, तो इसमें क्या लिखूं कॉमन डिफरेंस? मुझे लगता है कोई बोलेगा कैपिटल D लिखो, क्योंकि उसमें स्मॉलर लिखा है, इसमें कैपिटल लिखो। नहीं, इसने पहले ही बताया ना क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो उसकी कॉमन डिफरेंस है वो इसकी भी रहेगी। इसने बताया ना सेम है, अगर नहीं बताया होता तो हम डिफरेंट लिखते। तो इसने बताया सेम कॉमन डिफरेंस है। इज इट ओके? सो कॉमन डिफरेंस यहां भी D है, यहां भी D है, अलग अलग करके दे दिया मैंने। अब इसकी 100 टर्म लिखते हैं। A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D। इज इट ओके? आया आपको समझ? पहले AP के लिए, दूसरे AP के लिए सिर्फ इतना फर्क रखा, पहले AP को कैपिटल ले लिया और दूसरे AP को, मगर कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए इसको स्मॉलर ही ले लिया। अब आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, what is the first condition? I will tell you. The difference between their 100 terms is 100. हम मान लेते हैं जो ये पहला AP है इसकी टर्म बड़ी है, तो मैं लिखता हूं A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन अजीब है, उसकी 100 वाली टर्म को इसकी 100 वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसने खुद ही क्वेश्चन में कहा कि आंसर क्या निकलेगा 100, यानी कि 100 वाली टर्म में डिफरेंस क्या है 100। तो मैंने A100 से A100 माइनस किया, मुझे कितना मिला 100, ये गिवन है वही से। अब देखो A100 के लिए मैंने एक्सप्रेशन यहां लिखा है, मैं लिखता हूं A प्लस A1 लिखो या A सीधे लिखो, A प्लस 99D, ये हो गया इसके लिए। अब माइनस, क्योंकि यहां पर दो टर्म्स मुझे लिखने, इसके भी लिखने हैं, A100 ये वाला, इसका क्या है A प्लस 99D, लेकिन स्मॉलर A प्लस, मगर ये दो है इसलिए मैं ब्रैकेट रखता हूं, A प्लस 99D इज इट ओके, इज इक्वल टू 100, राइट। अब आप देख लीजिए, ब्रैकेट इसलिए रखा क्योंकि सामने माइनस है, माइनस नहीं होता तो जरूरत नहीं थी। अब A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D is equal to 100. Now let's see, A is plus, right? A is minus. So you can check it here. You cannot cancel this A with this A because this is capital, right? It is smaller, so we cannot cancel them because these are different. But we can cancel 99D with 99D because these are same. So I will cancel this with this. What I get, I will write here. Okay, A minus A is equal to 100. So what I got from this condition, A minus A is equal to 100. कोई ऐसा नहीं कह सकता A minus A is equal to 0. No, because these are different ways. अलग अलग AP से, ये सेम नहीं है। Is it okay? D को क्यों कैंसिल किया, वो क्या थे, सेम थे, और वो बताया गया था। Okay, now it's okay. Is it okay? Now let's come for 1000th term. I will write this first. अब कुछ कह रहे हैं, अब देख लीजिए इधर, अब मैं कौन सी टर्म लिखूं, 1000th टर्म। अब 1000 टर्म को डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि इससे तो आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, टू द सेकंड कंडीशन, वैसे कंडीशन तो है नहीं, अब हमने लिखा 1000th टर्म, A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू व्हाट, हमें इसको निकालना है। A1000 इज इक्वल टू व्हाट, हमको पता नहीं, हम इसको ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये यही पूछता है क्या निकलेगा। तो मैं यहां से कुछ नहीं लिखता हूं, ये मैं बता रहा था, ये निकालना है। तो मैं लिखता हूं यहां पर A1000 के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखोगे, A प्लस 999D माइनस, इसको ब्रैकेट लिखोगे, A प्लस 999D इज इट ओके, विच इज इक्वल टू A प्लस 999D माइनस, ये A है
minus 999D. Is it okay? Now what would you like to cancel? 999D, it is plus, it is minus, so cancelled. What we get? A minus A. A minus, we get A minus A, right? 1000th term में क्या difference हमें मिली? Capital A minus smaller a. But what is capital A minus smaller a? Already proved. So अगर A minus A is equal to this, तो मैं इसको लिखूंगा which is equal to A minus A is equal to 100. आप कैसे इसको लिखोगे 100? यूजिंग फर्स्ट, ये वैल्यू कहां से लाया? ये वैल्यू कहां से लाया? फर्स्ट से। फर्स्ट में हमने प्रूव किया A माइनस ए इज इक्वल टू 100, तो यहां पर भी 1000 टर्म में क्या निकला? हमें A माइनस ए ही निकला, उसका वैल्यू पहले 100 है, तो यहां पर भी 100 है। इसका मतलब है अगर 100 टर्म में डिफरेंस 100 है, 1000 टर्म में भी क्या होगी? और अगर 1 लाख वाली टर्म आप लोगे, उसमें भी डिफरेंस क्या होगी? 100 ही होगी। ये नहीं 1000 टर्म में 1000 होगी। Is it okay? So this question is over. The question is, how many 3-digit numbers are divisible by 7? Okay, can you tell me what is smaller 3-digit number and bigger 3-digit number? Smaller 100. Okay, smaller is 100, right? 999, right? So from 100 to 999, we have to check how many 3-digit numbers will be divided by what? 7. 7 से कौन कौन डिवाइड होगा? 100 से लेकर 999 तक देखना है कौन कौन सा नंबर किसे होगा डिवाइड। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा मसला है, लेकिन हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसका सॉल्यूशन है और ये आसानी से हो जाता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा 3-digit नंबर्स। ओके, आप लिखेंगे the 3-digit numbers are digit numbers are now 3-digit numbers divisible by 7, divisible by 7 or 3-digit numbers divisible by 7 or. So now listen, 100 is 3-digit number smaller, but 100 is not divisible by 7, right? I will tell you 105 is divisible by 7. 105 comma 10 112 comma 119 comma so on 994. Is it okay? 100 is not divisible by 7. 101 is not divisible by 7. 102, 3, 4, these are not divisible by 7. So first 3-digit number which is divisible by 7 is 105. Then you add 777, right? And the largest 3-digit number divisible by 7 is 994. 995, 996, 997, these are not divisible by 7. Is it okay? So now this is the question, right? This is basically now an AP. So what you will do, you will write first term A105, A2, that is 112, D is equal to A2 minus A1, D 112 minus 105, D is equal to 7 because these numbers are divisible by 7. So D is 7, right? Now what you have to see, we will take this last number as AN. Okay, I will say let AN is equal to 994. Now for AN I will write down the formula. What is the formula for AN? Can anybody tell me? A plus n minus 1 D is equal to 994, right? What is A? 105 plus n minus 1. What is D? D is 7. 994, right? Now let's see, I will transfer this term there. N minus 1, 7 is equal to 994 minus 105. Okay, Fiza, tell me.
994 minus 105. How much? 89. Okay, it is 889. Right? Now I will write from this side. Okay, this side. Okay, 889. N minus 1 is equal to 889 divided by 7. This 7, right? So divide by 7. Okay, what we get? 127. 127, right? Now I will transfer this minus 1 from LHS to RHS. So it is here minus, here I will get it plus. So 1 to 8. That means 128 terms of 3-digit numbers are divisible by 7. Okay? वरना मत हम कर सकते थे, कितनों का हम चेक करते, तो इसने हमें सीधे बता दिया 128 टर्म्स ऐसी हैं 3-digit नंबर्स की जिनको हम डिवाइड 7 से कर सकते हैं. ओके, हेंस 128 3-digit numbers are divisible by 7, right? Question number 14. Question number 14 is, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? How many multiples of what? 4. Can you tell me what are the multiples of 4? Tell me. आप बता सकते हैं मुझे multiples of 4? ओके, बताइए, आप बताइए. सॉरी, 4 8. आप 8 पर कहां पहुंच गए? पहले से शुरू करो. व्हाट मल्टीपल ऑफ 4? आप बोलो. 4 1 4. 4 के मल्टीपल देखने हैं. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12. ओके, 4 8 12 16 20 and so on, right? But we want those multiples of 4 which lie between 10 and 250. आपको वो मल्टीपल 4 के लेने हैं जो 10 और 250 के बीच में आते. तो मैं लिखूंगा इसको और आप खामोश रहिए. The multiples of 4 between 10 and 250 are multiples of 4 between 10 and 250. Now listen, multiple of 4. First I will write. Suppose 4 1s 4, 4 2s 8, 4 3s 12, 4 4s 16, 4 5s 20, and so on. Now listen, these multiples of 4 should be between 10 and 250. So this is not between 10, it is below 10. So I will cancel it. 8 is also below 10, so it is not included. Now first multiple of 4, 10 onwards, and before 250 is 12, then 16, then 20, and last one I will write 248. That is the last one. Okay, 248. If you will write 252, that is another one, but that is beyond 250. वो 250 से बाहर है, हमें उससे नीचे ही लाना है. Is it okay? So now listen. A is equal to 12, A2 16, D A2 minus A1, D 16 minus 12, D 4, right? Because we know these are the multiples of 4, so it may be 4. But still I show how we can find it. Now let's come to the last, An. Let An is equal to 248. Now I will write its formula. A plus n minus 1 d 248. So what is A? 12 plus n minus 1. What is d? That's 4.
248, right? Now I will move here. I will write n minus 1, d is 4, 248, 12 I will transfer on left hand side, right hand side, so it is now negative. You subtract it. How much? 236. 236 or 238? 236, right? N minus 1 is equal to 236 divided by 4. N minus 1, how much? 59. So it is 59. N is equal to 59. This one I will transfer right hand side, it will become plus. So now it is 60, right? So between 10 and 250, multiples of 4 are, how many multiples of 4 are? There are 60 multiples of 4 between 10 and 250. Is it okay? So there are 60 multiples of 4 between 10 and 250. ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। दो एपीज है, एक ही एपी, ऊपर एक एपी मैंने पहले लिख के रखा है और दूसरा एपी ये है। ये बोलता है, आप देख लीजिए पहले, ये इसकी पहली टर्म है 63, इसकी क्या है 3 है पहली टर्म, इसका है 65, इसका क्या है 10, इसका थर्ड टर्म है 67 और इसका ओके। ये बोलता है एन का वो वैल्यू निकालो, इन दोनों एपीज का वैल्यू सेम आ जाएगा। क्या आएगा? सपोज फर्स्ट टर्म में तो सेम वैल्यू है ही नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना है। कौन से एन के वैल्यू पर दोनों एपीज की टर्म्स का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, वही हमें देखना है। इज इट ओके? ओके, नाउ लेट्स सी। फर्स्ट आई वुड लाइक टू राइट फॉर फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट एपी। तो पहले एपी के लिए मैं लिखूंगा A1 63, A2 65, D A2 minus A1, D is equal to 65 minus 63, D is equal to 2, right? Is it okay? Nth term of फर्स्ट एपी आप लिखेंगे an, इसकी nth टर्म हम निकाल रहे हैं। इज इट ओके? an क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 d। अब an a क्या है? अगर आप इसको 1 लिखोगे इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट एपी है, वरना लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो 63 है, n minus 1, what is d? d is 2, right? okay, let's leave it here। हमने इसको निकाला तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी छोड़ो आप इसको। हो गया। ये कौन सा एपी था? फर्स्ट एपी। डू द सेम प्रोसीजर फॉर सेकंड एपी। आई विल राइट फॉर सेकंड एपी। व्हाट इज सेकंड एपी? This is second AP. Okay, first term A1 is equal to 3, A2 is equal to 10, D is equal to A2 minus A1. I will write from this side. D is equal to what? A2, that is 10 minus 3. 10 minus 3 is equal to 7, right? Now what you will find? D आपको मिला, nth term of second AP, nth term of second AP, तो वो an बट 2 इसलिए लिखोगे क्योंकि ये कौन सा AP है? इज इट ओके? ओके, वो हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d। A is
A is 3, n minus 1, what is D? D is 7. Is it okay? अब हमने ये nth टर्म निकाल दी, मगर ये n है कितना वो हमें पता, तो हम इनको कंपेयर करेंगे। यानी कि ये जो पहला है, पहला ये है ना, ये तो इसको हम लिखेंगे उसके बराबर, ठीक है। लेट an1 इज इक्वल टू an2, यानी कि पहली AP का an दूसरी AP के an के बराबर। अब इसको अपना वैल्यू लाओ, इसका क्या वैल्यू है? 63 n माइनस 1 2, 63 प्लस n माइनस 1 2, उसको है 3 प्लस n minus 1 7. Okay, now it is your task. What you will do, you will multiply now them. 63 plus n into 2, 2n, right? 1 into 2 minus 2, 3, okay, n into 7, 7n minus 7. Now I will transfer n terms on left hand side and constant terms on right hand side. This is n term 2n, okay, 7n. I will write 2n minus 7n. I will transfer this 7n on left hand side. Okay, all the constant terms I will take on right hand side. So first term is minus, okay, write down first this 3 minus 7, okay, minus 63 plus 2. So what I did, 3 is on right hand side, minus 7, okay. Now 63 I will take it on right hand side. It is positive here, it will become negative. 2 is negative, it will become right. So now you subtract 2n from 7n, you will get minus 5n minus. Now you can calculate these terms. How much you get? 63 and 7, it becomes 70. 70 and 5 are, so minus 65, I think so. 65 minus 65. Now if you cancel minus with minus, you get n is equal to 65 divided by 5. N is equal to 5 ones are 5 threes are 5 ones are 5 and 5 threes are, so n is equal to 13. N is equal to 13. It means that 13th term of this AP, first AP, would be equal to 13th term of this AP. Is it okay? Hence their 13th terms will be equal. Hence their 13th terms will be equal. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में थर्ड टर्म है 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12. हमें एक एपी बनाना है जिसमें थर्ड टर्म है 16, थर्ड टर्म का वैल्यू है 16, और ये भी दिया गया है जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से ज्यादा है 12. तो हमें एक एपी बनाना है. थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16, it is given, and seventh term exceeds fifth term by 12. So we have to find out what is the AP. Okay, let's start. अब हम स्टार्ट करते हैं. हम लिखेंगे A3 is equivalent to 16. It is given. So I will write A plus 2D is equal to 16. So this is my first equation, right? A3 is 16. So I have written A3 16. A plus 2D is equal to 16. It is a formula of finding third term. Now seventh term exceeds fifth term by 12. By second condition, or you can say given condition. Now let's see what is the condition. Condition is seventh term A7 minus A5 is equal to 12. The difference between seventh term
and fifth term is what? 12. Now I will write expression for seventh term. That is a plus 6d, right? Minus a plus 4d, okay, is equal to 12. Is equal to, okay, can anybody tell me, have I made any mistake in writing this part, last part? Bracket. Yeah, I have not used bracket, so I should use bracket here. मुझे यहां पर ब्रैकेट यूज करना चाहिए था क्योंकि यहां पर माइनस साइन है. इज इट ओके? नाउ लेट्स सी, a plus 6d minus a minus into plus 4d, that means minus 4d is equal to 12. Now let's see, this a is plus, this a is minus, they will be cancelled. Now what remains there? There remains 6d minus 4d is equal to 12, right? When you subtract 4d from 6d, what you get? 2d is equal to 12. D is equivalent to 12 divided by 2. D is equal to 6, right? The value of D is 6. Now what we will do? We will substitute this value of D in first equation, right? So that we get first term. A. Substitute this value of D in first. So this is first. A plus 2, instead of D I will write 6. D के बदले क्या लिखूंगा? 6 is equal to 16. I will write from this side, right? A 2 plus, sorry, a plus, it is a, it is not 2. A plus 12 is equal to 16. A is equal to 16 minus 12. A is equal to 4, right? A is equal to So A plus 12. a plus 12. Isn't it 12? Abhi 2 plus 12. Okay, a plus. I did again that mistake. A plus 12, right? Now it is okay, right? So what is the value of A? 4. And the value of D is 6. Is it okay? Now we have first term and we want to find out some more terms. 2, 3 terms. Is it okay? So let's find out A2. A2 is equal to A plus D, right? What is A? 4 plus D, that is 6. So it is 10. A2 is equal to 10, right? A3 is 16, that is given. So I will write, therefore AP, what is the first term? That is 4. Second term 10. Third term already given, that is 16. So this is the AP. He wanted us to find out the AP. So this is the AP, right? Okay, now this part is over. Okay, हमारे पास है question number 17. This is the AP. So we have to find 20th term from last. Is it okay? It is very important question. This question, and there is an example. Example number, I think 11, something like that. In that example, example 8, where you have to find out 11th term from the last. Okay? Here you have to find 20th term from the last. There you have to find 11th term from the last. So the method is same. अब सुन लीजिए, ये एक AP है, इसमें हमें लास्ट से, इस वाले साइड से 20वीं टर्म को निकालना है, वो उसका वैल्यू है क्या? तो यहां से नहीं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यहां से 20वीं टर्म नहीं. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें पता चलना चाहिए इसमें कितने टर्म्स है. First we have to know how many terms are there, right? So let's start. I will write A1 is equal to 3, A2 is equal to 8, D is equal to A2 minus A1. So first of all, you should find out D, because at least for each question we need D, right? So 8 minus 3, how much? 5. D is 5. D is, right?
D is 5. Common difference is 5. Now, this is the last term. Is it okay? I will write AN, last term, 253. Okay? Is it okay? Naveed, is it okay? Now, you will use its formula. What is the formula? Can you tell me? You don't know. But it's very easy. Naveed, tell me the formula of this AN. Right. A plus n minus 1 D is equal to 2, 5, 3. Now what is A? A is 3 plus n minus 1. What is D? D is 5 is equal to 2, 5, 3. Right? Now I will transfer this 3 from left hand side to right hand side. N minus 1, 5 is equal to 2, 5, 3 minus this 3. Okay, n minus 1, 5 is equivalent to 250, right? N minus 1 is equal to 250 divided by this 5, right? N minus 1 is equal to 5 5s. I think we will get 50. Okay? Okay, now let's see from here. N is equal to 50 plus 1. N is equal to 51, right? N is equal to 50. 50 plus 1. This one, it is minus. Right hand side, it becomes plus. Now, there is a question. We want to find out 20th term from last. लास्ट से हमें क्या आना है वापस? कौन सी टर्म? 20वीं टर्म. आप मुझे बता सकते हैं फर्स्ट से वो कौन सी टर्म हो सकती है? लास्ट से 20वीं होगी. फ्रॉम फर्स्ट व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द टर्म? व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ द टर्म? टोटल टर्म्स आर देयर 51. ओके, लास्ट से 20वीं टर्म, फर्स्ट से वो कौन सी टर्म होगी? बिकॉज वी यूज फॉर्मूला फ्रॉम फर्स्ट. ओके, you say 31, okay? You say because what you do, you want to find out 20th term from last. You subtract 20 from 50. Is it okay? But that's not correct. That's not correct. Basically, I will write 20th term from last. 20th term from last. N minus 20 plus 1. This is the formula. Okay, so N is how much? 51 minus 20, that is 31 plus 1, so it is 32. Now from first you have to find out 32 term. I will tell you how. Suppose I will ask you what is the fourth term from 10. You have 10 numbers. Suppose I will give you, suppose this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay, 10. Okay, I will ask you what is the fourth term from last in this numbering. What is the fourth term from last? You will subtract 4 from 10. That will become, when you subtract 4 from 10, that will become 6th term. Is it okay? But if you see fourth term, 1, 2, 3, 4, it is the fourth term, 7. Is it okay? You cannot subtract. Okay? You subtract but add 1. So now we have to find out 32nd term. So I will write A32. Therefore A32, A plus 31D. Now A is 3, 31 is 31. What is D? D is 5. So 3 plus 31 into 5. That is 155, I think so. 155. So 158. So 20th term from last. But that is 32nd term from first. Is it okay? 20 term from last. But what is that? That is 32nd term from the first. Is it okay? So its value is 158. This question is over. We have question number 18.
In 18th question, the condition is that the sum of 4th term and 8th term is 24. And the sum of 6th term and 10th term is 44. We have to find first 3 terms of this AP. हमारे पास एक AP है, इसमें 4th term और 8th term का सम है 24 और फिर 6th term और 10th term का सम है 44. हमें इसको एक AP बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं. लेट्स स्टार्ट. By first condition, sum of 4th and I will write like this. Sum of 4th and 8th terms is equal to 24. So I will write A4, A8 is equivalent to 24. Is it okay? Okay, Sairan, tell me what I will use here, the formula. No, that's not the formula. यहाँ पर हम simple formula use करेंगे. A plus 3D, right? A plus 3D. Okay. A plus 7D is equal to 24. Okay. Can you tell me, did I make any mistake here? Sorry, it is plus. Okay. Have I done any mistake? I have not used bracket. So you want me to use bracket here, right? Do you want? You don't want. Why? Because no positive and negative. Okay, because the sign is positive, it will not make any difference, right? If it is minus, then you have to put bracket, right? So now let's start. Now what we have here? We have A plus A. So you can write 2A. Is it okay? 3D and 7D. How much? Sairan. So 10D is equal to 24. Is it okay? So this is first equation. This is, here we cannot cancel this A with this A. Is it okay? Because both are positive. Now let's take another condition. Sum of what? Sum of 6th term, sum of 6th and 10th term is equal to how much? That is 44. Is it okay? Now A6 plus A10 is equal to 44, right? Now A plus 5D plus A plus 9D is equal to 44. So you can add them. 2A plus 5D and 9D. How much? 14D, right? 44. It is second equation. It is, we have two equations. This is first one. This is second equation. Now what you can do? Tell me what we should do. We will subtract first from second or second from first. Okay, so that we get one variable. Subtract second from first. Second from first. What is first? 2A plus 10D is equal to 24. 2A plus 14D is equal to 44, right? Now what we will do? I'll change it sign because we are subtracting. Okay, so it is plus 2A, it will become minus. It will also become minus. It is also minus now. 2A is cancelled. Now I have 10D plus 14D minus. Sign is different. Subtract 10D from 14D. You will get minus 4D because we take sign of bigger term, right? Here we have 44 minus and 24 is plus. So again we have different signs. I will subtract 24 from 44. I will get 20. Okay? Okay, can you tell me what would be the sign of that 20? Minus, because we take the sign of bigger term. This is the bigger term. It is sign is minus. Okay? So it is minus here. Now this minus is cancelled with this. D is equal to 20 divided by 4. D is equal to 20 by, I will write here,
Okay, D is equal to 4 5s are 20. 4 1s are 4 5s are. So I will write 5. Is it okay? The value of D is 5. Now what you are going to do? You can substitute this value of D either in first equation or second equation. Anyone you can choose. So I will subtract it in first equation. Substitute this in first. What is first? 2a plus 10d. So 2a plus 10, what is d? That's 5. Here it is 5. Now it is equal to 24, right? 2a plus 5 into 10, that's 50, is equal to 24. 2a is equal to 24. I will transfer 50 on right hand side, it will become minus. Now 2a is equal to how much? Minus 26. Minus 26. A is equal to minus 26 divided by 2. A is equal to minus 13, right? Now we have first term, that's A, and we have common difference, that is D. So we can find at least 2-3 terms. He asks us to find out how many terms? 3 terms. Okay, so I will find second term. A2 is equal to A plus D, right? What is A? Minus 13 plus D. D is 5, so it will become minus 8. A3 is equal to A plus 2D. What is A? That is A is minus 13 plus 2. What is D? That's 5. So minus 13 plus 10, it will become minus 3. So I have found 3 terms. Okay, I can write it also like this. Therefore AP is equal to first term is minus 13, second term is minus 8, third term is minus 3, and so on. Is it okay? Now this question is over. Question number 19. Subbarao started his job in 1995 with an annual salary of 5,000, and each year he got 200 as his increment, and his salary reached 7,000. So the question is, in which year his salary reached 7,000? सुब्बाराव ने जॉब एक शुरू किया है 1995 में. सालाना उसको 5,000 रुपीज मिलते थे सैलरी, और हर साल 200 इसको बढ़ जाते थे, तो इसकी सैलरी पहुंच जाती है 7,000. हमें निकालना है किस साल इसकी 7,000 सैलरी हो जाती है. तो हम पहले लिखेंगे, मैं लिखूंगा स्टार्टिंग सैलरी rupees 5,000. Okay, I will write A1 is equal to 5,000. Let's ignore rupees now. Is it okay? A1 means first term, right? Now increment. What is increment? Sorry, rupees 200 each year. I will write therefore D 200. D common difference, because each year 200 is increased. So I have used a shortcut formula right now. Is it okay? Now final salary is equal to rupees 7,000. Is it okay? Instead of 7,000, I will write AN is equal to 7,000. Now A plus N minus 1 D is equal to 7,000. What is A? 5,000 plus N minus 1. What is D? 200. 7,000 is equal to 7,000. Now N minus 1, 200 is equal to 7,000. I will take this 5,000 on right hand side.
it will become minus. So n minus 1, 200 is equal to 2000. Now let's see, n minus 1 is equal to 2000 divided by 200. So when you divide 2000 by 200, how much you get? I will write from this side. Okay, I will write here. N minus 1 is equal to cancelled. So 10. N is equal to 10 plus 1. N is equal to 11, right? So how many years are there? Number of years 11. Okay. अब हम लिखेंगे in terms of years. In terms of years. A1 1995. Okay. D is equal to 1. 1995 पहला साल है, तो दूसरा साल क्या हो गया 1996. तो डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस तो 1 ही रहेगा ना, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा इसको भी, डी इज इक्वल टू 1. नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए व्हाट इज ए इज 1995 ये पहला साल है, प्लस n इज 11 जो हमने ऊपर निकाला. व्हाट इज डी, दैट इज 1. सो 1995 प्लस 10 इंटू 1, 1995 प्लस 10, 2005. So in 2005 year his salary would be 7000. Okay, पहले हमने n निकाला, कितने साल आती है 11 years है ये. तो अब हमने शुरू किया कौन से 1995 से. तो ये जब हमने इसको वैल्यू दे दिया तो an आ गया. ये जो ईयर है, किस ईयर इसको 7000 हो जाएगा, वो है 2005, राइट. Hence in 2005 his salary will be rupees 7000. Okay, this question is over. Question number 20. रामकली एक लड़की है, उसने एक हफ्ते में 5 रुपए बचाए, दूसरे हफ्ते में 1.75 रुपीज ज्यादा बचाए, इनकी 5 रुपए और 1.75 रुपीज. तो इसी तरह से उसके हमें देखना है किस हफ्ते में ये बचा सकती है 20.75 पैसे. तो ये क्वेश्चन है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें देखना है कितने हफ्तों में 20.75 पैसे इसको हो जाते हैं. तो इसलिए हम करेंगे पहले शुरू, हम लिखेंगे सेविंग इन फर्स्ट वीक is equal to rupees 5. Therefore first term A is equal to 5. Is it okay? Now increment in saving rupees 1.75. Is it okay? 1.75. Therefore saving in second week is equal to rupees 5 plus 1.75. That is 6.75. Therefore A2 second term, that is 6.75. D A2 minus A1. D, what is A2? 6.75 minus 5. So D is 1.75. Now final saving or saving in the nth week.
that is rupees 20.75, right? 75. So I can write, therefore an is equal to 20.75, last term. So for an I will write a plus n minus 1 d 20.75. I will write from this side. Now what is a? 5. Is it okay? 5 plus n. What is n? N is not given. Minus 1. D is 1.75 is equal to 20.75. I will transfer it on right hand side. N minus 1, 1.75, 20.75 minus 5. So now n minus 1, 1.75 is equal to how much? 15.75. N minus 1, 15.75 divided by this much, 1.75. Okay, n minus 1, you divide it. I think 10. 9. 9. Okay, you say 9. So it is 9. Now it is 9 plus 1. N is equal to 10. Is it okay? Right? So in 10th week, she will save 20.75 rupees. So in 10th week, she will save रुपीज 20.75. तो इस तरह से क्वेश्चन भी हो गया, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई.